Israel, Director Mr. Israel, Jamil Saab, teachers, parents, students, ladies and gentlemen. I had much to say, but having heard Mr. Jamil Saab for the past 45 minutes, I have very little stamina to make you bear this ordeal again. If this was half his report, I think you would have to sit till 5 o'clock to let him finish his full report. I am singularly honored. It's a pleasure, it's an honor to be invited to this school and admire, really admire, the tremendous effort that has been put in by Israel Saab. This is not an ordinary effort, and it cannot be done by regular people. So I think Mr. Israel is indeed a very special man, and I think all of you, particularly the students, are fortunate that God has blessed you with such a mentor. I was also very, very heartened to see the exotic national regions represented in the first dance, starting with Vande Mataram, because that, I believe, is truly what India reflects. And what is exceptionally heartening, two things: the composition of students of mixed communities, because that is so essential to live together and grow together and study together to understand what India is. And also the fact that so many girls are encouraged to study here. Here in Mewat, in Nu, not known for its educational achievements, to set up this beautiful school and to encourage young girls to come and study. I not only applaud Israel Saab, but I applaud those parents and the teachers who have encouraged these young girls to come and study here. And to that end, I think that all my blessings and gratitude to you girls, because I think that you will show the way to future India. Jamil Saab was reading the number of students who made it to MBBS or the NIT or the IIT. To my mind, that is not a great achievement. I think what lies ahead in life and what you become, the fact that you learn to enjoy life and to get further meaning from life, if you can learn that in the school, that will hold you in much greater stead. नौकरियां आप सबको मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है. पैसे भी आप लोग कमा लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन आपकी जिंदगी असलियत में कितनी रिच होगी, वो आपके दिमाग से आपको मिलेगा. और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपके टीचर्स आपको ये सबक दें कि दिमाग की अमीरी ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी से और BA और MA की क्लासेस से. आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आपने को अपने को महदूद कर लिया, अगर अपनी लक्ष्मण रेखा खुद बना ली, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे. क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसानी दिमाग की लक्ष्मण रेखा होती नहीं है, सिर्फ इंसान खुद बना देता है. मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं क्योंकि आपके बीच में हूँ, अपना खुद का उदाहरण दे देता हूँ कि मैं पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले में पैदा हुआ था. फैज़ बाज़ार उसका नाम है. मेरे दोस्त जो उस गली में रहते थे और आज भी मेरे दोस्त हैं, एक पान वाले का बच्चा था, शाम को खुद पान बेचा करता था.
एक कोयले की टाल उनके वालिद चलाते थे, और चूंकि मेरा घर गोलचा सिनेमा से लगा हुआ था तो गोलचा सिनेमा में जो जमादार था उनका बेटा हमारा दोस्त था, और हम लोग शाम को मिलके साथ में फ़ुटबॉल खेला करते थे। हमने अपने अपने मुख्तलिफ रास्ते चुन लिए, और चूँकि मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि आपकी कोई सीमा नहीं है, आप पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, कॉलेज में पढ़िए। और उस वक्त शौक़ हुआ कि IAS का इम्तहान दिया जाए, तो हमने एक उस्ताद ढूंढ लिए थे कनॉट प्लेस में, उनका नाम राव साहब था, और मुझसे फ़ीस नहीं लिया करते थे, तो मुझे पसंद करने लगे थे। और राव साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ आके शाम में बैठा करो, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में IAS क्वालिफ़ाई कर लोगे। और वही हुआ, उनका आशीर्वाद रहा। तो सवाल ये था कि क्या आप अपने को महदूद कर लेंगे, क्या दरियागंज में हमेशा रहेंगे, क्या कोई बिज़नेस करेंगे, या IAS करेंगे, और IAS करेंगे तो कितनी मेहनत करेंगे इम्तहान पास करने के लिए। लेकिन और यहाँ सब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में लोग IAS को बहुत बड़ा समझते हैं। मैंने 22-23 साल की नौकरी में सर्विस छोड़ दी, क्योंकि मैं समझता था कि ये नए सफ़र किए जाएं, नए लोगों से मुलाकात की जाए, नए विदेश घूमे जाएं। और मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला गया। मैं वहाँ फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लगा, और फिर वापस आया और मुझे जामिया में मौका मिला। तो मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए आपको सुना रहा था कि ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि आपके वालिदैन का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपने खुद ने अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ली हैं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और ये हिंदुस्तान में रोज़ साबित होता है। ये साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से निकलते हैं। ये साबित होता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री कहाँ से निकलते हैं। ये उदाहरण भरे पड़े हैं इस मुल्क में और इस देश में। तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मैंने अभी पिछले 1 महीने में बहुत दौरे किए। माफ़ कीजिएगा, मैं जमील साहब की नकल नहीं करना चाहता, मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। मैंने बहुत दौरे किए, कर्नाटक गया, तेलंगाना गया, आंध्र प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश गया, यही देखने के लिए कि मुख्तलिफ़ स्कूल कैसे चल रहे हैं। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि आपकी बुनियाद स्कूल में रखी जाएगी। और बहुत ही हार्टनिंग है, बहुत हमको कॉन्फिडेंस मिलता है ये देख के कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में ऐसे कितने अच्छे स्कूल काम कर रहे हैं। और इससे विश्वास होता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी का एक फ्यूचर है, आप लोगों का एक फ्यूचर है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस दुनिया में जो इतनी डिस्टर्ब दुनिया है, यूक्रेन में जंग चल रही है, फार ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रॉब्लम है, चीन में प्रॉब्लम है, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में, इस हरियाली में, इस तंबू के नीचे पीस में आप लोग पढ़ते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्रिया, भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया आप करें, वो काफ़ी नहीं। तो इसलिए फिर मैं आपको कहूँगा कि आप खुशकिस्मत हैं, इज़राइल साहब जैसे मेंटर आपको मिले हैं, आपके टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। एक बात शायद टीचर्स को अच्छी ना लगे, मैं बताऊं कि अंग्रेज़ी का प्रोनंसिएशन ज़रा इम्प्रूव कर लें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्पीक, टू नो इंग्लिश एंड टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। एंड that I noticed that there is very little focus on how children are speaking the language. They will speak good Hindi and Urdu and their own vernacular language, but when they step out in civvy street looking for jobs, in the private sector particularly, I imagine you need to work on their speaking skills. A school has to conduct elocution lessons separately so that these young boys and girls, when they come out of Haryana, they are not speaking Haryanvi English.
or UP English. I'm sorry, but you must focus on that if they have to grow. A child can be very, very bright, but he loses his job if he can't speak, if he can't articulate. So I am extremely honored, sir, that you gave me the honor of coming here today. I am delighted to meet you. In fact, I am singularly honored that you